हेलो एवरीवन, आई एम ओम। Hey there everyone, I am Amey. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अ ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। जैसे बट ब्रो इसमें अपन डिस्कस क्या करने वाले हैं? सी ब्रो, जिसमें हम वेक्टर्स एंड टेंसर्स नोटेशन डिस्कस करेंगे। अलोंग विद दैट हम मैथमेटिकल इक्वेशंस जो होगी इन अ कार्टेशियन फॉर्मेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इन अ मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर और मोमेंटम ट्रांसफर, ये हम अपेंडिक्स बी में डिस्कस करने वाले। लेकिन अपेंडिक्स ए में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। Vectors, appendix A point 1 2 3 to till 9, and after that appendix B भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। along with that हम यहाँ पर फिजिकल एनी क्वांटिटीज एंड उनके नोटेशंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ब्रो, तू कंटिन्यू कर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर वेक्टर्स एंड द टेंसर्स नोटेशन, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर ऑपरेशंस फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देन द वेक्टर ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, देन द टेंसर्स ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, देन द वेक्टर्स एंड टेंसर इन डिफरेंशियल ऑपरेशंस क्या होते हैं, देन वेक्टर्स एंड टेंसर्स इंटीग्रल थ्योरम्स क्या होती है। ठीक है, देन डिफरेंशियल ऑपरेशंस इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स एंड द फॉलो ऑन all 8.8 and this point 9 also in which comments on the vector tensor notations पे हम कुछ comments करेंगे, right? So let's move to the next point. सी एवरीवन, जिसमें कि हम यहाँ पर स्केलर्स को कैसे नोटेशन कैसे है हमारा स्केलर्स का। सी वी रिप्रेजेंट करते हैं एस से फॉर द स्केलर्स, देन वी फॉर द वेक्टर्स, एंड हम इसमें न्यू क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, दैट इज द टेंसर, जो कि सेकंड ऑर्डर टेंसर हम बोलते हैं इसे। ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ टाउ, राइट। नाउ इन अ सेम वे हम कैसे यहाँ पर स्केलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक हमारा स्केलर वेक्टर सो पकड़ लो कि से इट इज एम। ठीक है, तो हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारा वेक्टर रहा कुछ, then we can represent with the square brackets, and if we have the tensor then we will represent it as a curly bracket. Okay, अभी इनिशियली हम सारे बेसिक्स पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे, लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम एग्जाम्स में यूज करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सॉल्विंग द मेन इक्वेशंस। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जिसमें हम शेल बैलेंस एंड इक्वेशन ऑफ चेंज, ये जो इसकी इक्वेशंस है फॉर ऑल थ्री फॉर्मेट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड द कार्टेशियन, हम यूज करने वाले इन ईच टॉपिक। चाहे वो फॉलिंग फिल्म का हो, चाहे वो फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप हो, चाहे वो फ्लो ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड्स हो, फॉर अ स्फेरिकल फ्लो हो। ठीक है, स्फेरिकल कंडीशन में हो, कौन सी भी कंडीशन हो, कौन सी भी चीज हो, हमें इन इक्वेशंस का, इन फंडामेंटल्स का यूज 100% करना है। ठीक है, दैट्स व्हाई लेट्स फोकस ऑन दिस मैथमेटिकल पार्ट। It is like somewhat backbone of the transport phenomena, right? Because transport phenomena में हम पहले फिजिक्स अप्लाई करके हम assumptions लेके कुछ रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद हमें कंटिन्यूअसली मैथमेटिकल कंसेप्ट्स लगाकर इक्वेशंस को सॉल्व कर हमारे रिजल्ट की तरफ, दैट इज आवर मोटो इज इन दिस ट्रांसपोर्ट फिनोमेना मोस्टली इज फॉर्मिंग द वेलोसिटी प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल, कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल। ठीक है, सो एंड या the main thing is the flux profile, right? So इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्केलर्स आर एंड एस, हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक आर एंड एस, अगर टू स्केलर्स है आर इंटू एस इक्वल्स टू एस इंटू आर, सेम होता है। देन फॉर द सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द थ्री स्केलर्स क्यू आर एंड एस, the order in which the multiplications are performed in the E material so that the associates law is valid। देखो Q into R S भी कर सकते हैं, और R into सॉरी या Q into QR into S, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर्स बाय द सम ऑफ द स्केलर्स P Q R, see this, हम पूरा जो यहाँ पर गिवन है उसके तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द वेस्ट ऑफ द टाइम सारा चीजें पढ़ना। इफ आई एम एक्सप्लेनिंग इट्स सफिशिएंट दैट कि हम कर यहाँ पर रहे कि मेकिंग इट टास्क इजी टू गेट simpler। And so now we are discussing about the vector operations on a geometrical point of view।
जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं सी वेक्टर एडिशन को हम डिस्कस करेंगे। सी दिस इज द वी वेक्टर, दिस इज द डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पे एडिशन क्या हो जाएगा, v प्लस डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली v माइनस डब्ल्यू वेक्टर, इसे हम इजीली समझ पाएंगे फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, सी दिस द पैरेललोग्राम, जो कि ये वेक्टर होगा आपका v, ये वेक्टर होगा आपका w, देन इट्स डायगोनल, जो बड़ा वाला डायगोनल होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, तो वो रिप्रेजेंट करता है v प्लस w। And if you are coming from this is your tail, this is your front point, then it will be simply v minus w, ठीक है। Now is it following cumulative law? Yes, it is following v plus w is equals to w plus v, simple। Now associative law क्या ये follow करता है, या v plus w plus u is equals to u plus v plus w, ठीक है। Vector subtraction is performed by reserving the sign of one vector and adding thus v minus w is equals to v plus minus w। ये सिंपली ये कह रहा है कि अगर आपको v वेक्टर है और आपको w वेक्टर माइनस w वेक्टर करना है, तो आप सिंपली w वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट करके ऐड कर दो। सपोज दिस इज अ w डायरेक्शन, तो आपको माइनस w चाहिए, तो यू कैन सी दिस इज द माइनस w, यू कैन यूज v प्लस माइनस w मीन्स इसी को आप ऐड कर सकते हो, सिंपली यही चीज कहा गया है, ठीक है। Now see, now we are discussing about the multiplication of a vector by a scalar. When a vector is multiplied by a scalar, the magnitude of the vector is altered but its direction does not। अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम एनी स्केलर से, देन इसका डायरेक्शन अल्टर नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड अल्टर हो सकता है, राइट, उसका डायरेक्शन अल्टर बिल्कुल नहीं होगा। सी ये क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है, s इंटू वी इज इक्वल टू वी इंटू एस। देन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, r इंटू एस इंटू वी, आर एस आर द स्केलर्स, राइट, सो आर एस इंटू वी, ठीक है। एक एस वेक्टर एस स्केलर से हमने वी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है और उन पूरे वेक्टर को हमने आर स्केलर से फिर से मल्टीप्लाई किया। इट विल बी सिंपली, अगर पहले आप आर और एस को दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो और उसके मल्टीप्लीकेशन को आप वी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको सेम रिजल्ट ऑब्टेन होगा। देन द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करता है, ये वेक्टर क्यू आर और एस में डिस्ट्रीब्यूट इजीली हो जाता है, राइट। See, now we are discussing about the resulting the rules governing a scalar product of a vector। Scalar product होता क्या है, scalar product क्या होता है, see this is a nothing but we call it as a dot product, we call it as a dot product, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सी v डॉट w, ठीक है, दो वेक्टर है, इज इक्वल्स टू v w मैग्नीट्यूड ऑफ v मैग्नीट्यूड ऑफ w इनटू cos ऑफ थीटा। थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स v एंड w। जो ये आपका v वेक्टर होगा एंड दिस द w वेक्टर होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, दैट इज द थीटा जो कि डॉट प्रोडक्ट ये कहता क्या, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि w का प्रोजेक्शन ऑन अ v, w का प्रोजेक्शन ऑन अ v, that will be w cos theta, that is nothing but the dot product। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, u dot v equals to v dot u होता है, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसका जो आप प्रोडक्ट करके आंसर मिलेगा that will be scalar not a vector, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। then it is associative, ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। then distributive, yeah, this law this dot product is a distributive। now see, this is the area we can obtain from this v dot w, as we have discussed the same thing जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, डॉट प्रोडक्ट v dot w एंड सिमिलर वे में यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अब देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या होता है, सी दिस द u वेक्टर, सपोज करो कि ये u वेक्टर है, ठीक है, दिस द u वेक्टर, ये आपका v वेक्टर है, ठीक है। तो जब आप v वेक्टर को ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे u के साथ, v क्रॉस u करोगे, देन द थंब पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ये जो थंब पॉइंटिंग अपवर्ड्स है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अ v क्रॉस u वेक्टर, यह सिंपली गिवन एज अ v w, ठीक है। यहाँ पे v क्रॉस w गिवन है, ठीक है, आप u ले सकते हो, w ले सकते हो, देन द एंगल इज द, यहाँ पे क्या उसका एंगल है फाई, देन क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, v w sin फाई इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द v क्रॉस w,
ठीक है, यहाँ पे हम आगे देखेंगे उसे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर। ठीक है, मैं देख भाई, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। जैसे कि हमने अभी कहा था कि v क्रॉस w क्या होता है, v क्रॉस w क्या होता है, इट इज सिंपली अबाउट v w sin phi। ठीक है, अब देखते हैं ये लॉ कौन कौन से फॉलो कर सकता है। ये क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो नहीं कर सकता है, बिकॉज v क्रॉस w, अगर v क्रॉस w करोगे तो पॉइंटिंग अपवर्ड आएगा, और अगर u क्रॉस v करोगे, सॉरी w क्रॉस अगर v करोगे आप तो पॉइंटिंग डाउनवर्ड होगा। ठीक है, द सेम थिंग यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट अपवर्ड होगा, यहाँ पे अगर पॉइंट करोगे तो नीचे होगा। ठीक है, सो ये क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, डायरेक्शन यहाँ पे अल्टर्ड होती है, नॉट एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता नहीं है, बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इजीली फॉलो कर सकता है। दिस w विल बी डिस्ट्रीब्यूट विद u एंड v। ठीक है, u क्रॉस w भी हो सकता है, प्लस करोगे देन वी विल गेट एज v क्रॉस w सिंपली। ओके, नाउ see now we are seeing about the multiple products of a vector। मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर में हम जानेंगे कि 2 से 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स को और 2 स्केलर प्रोडक्ट का यहाँ पर हम वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे, 2 वेक्टर प्रोडक्ट का हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे। अगर 2 वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, 2 स्केलर प्रोडक्ट है तो उनके बीच में वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, 2 वेक्टर प्रोडक्ट है तो उनके बीच में वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर कंपाइल की गई है। यू शुड गो थ्रू दिस, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन हियर, राइट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर मी is the vector operations in terms of the components, जिसमें कि हम जब हम आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें डेल की इक्वेशन होगी, दैट इज अ डेल्टा, डेल्टा आई जे हम यूज होगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, दैट इज अ डेल्टा आई जे। अगर आई इक्वल्स टू जे अगर होगा देन इट विल बी 1, एंड आई इज नॉट इक्वल्स टू जे होगा देन इट विल बी सिंपली 0। सी दिस इज द एप्सिलॉन ijk becomes 1 when the ijk is 1 2 3 2 3 1 and 3 1 2। Similarly, ijk becomes the -1 होता है, कब होता है, ijk जब ijk की वैल्यू 3 2 1 हो, 1 3 2 हो या 2 1 3 हो, ये साइकिल में चलती है। ठीक है, देन ijk 0 होता है if any two indices are alike। ठीक है, so this is about the vector operations in terms of its component। उनके कंपोनेंट्स के टर्म्स में हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे हम यूनिट वेक्टर्स डिस्कस करने वाले, जो कि मेरा फ्रेंड माय ग्रुपमेट श्रेयस विल डिस्कस विद यू। ठीक है, आगे अपेंडिक्स ए में वो आपको यूनिट वेक्टर्स के आगे की चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। वी विल अगेन मीट इन द अपेंडिक्स बी, तब तक के लिए थैंक यू। So hello guys, in this PPT we are learning about the unit vectors. Basically the unit vectors are the vectors that having the magnitude 1. In this part del 1, del 2 and del 3, this is del 1, this is del 2 and del 3 are the unit vectors. The direction of del 1 is in the direction, the direction of del 2 which is in the direction, and the direction of del 3 which is in the direction. So in this part the del 1 dot del 1, del 2 dot del 2 and del 3 dot del 3 is equals to 1, because here we can see that del 1 dot del 1 is equals to mod del 1 into cos theta, and in this part theta equals to 0 degree, so that if theta equals to 0 degree then this is 1, this is 1 and cos 0 degree equals to 1, so that del 1 dot del 1 equals to del 2 dot del 2 equals to del 3 dot del 3 equals to 1. Then in the next part del 1 dot del 2 equals to del 2 dot del 3 equals to del 3 dot del 1 equals to 0, because here theta equals to 90 degree, so that cos 90 degree equals to 0. Then in the next part, in this part this is the cross product, del 1 cross del 1 equals to del 2 cross del 2 and equals to del 3 cross del 3 equals to 0, because here we can write that del 1 cross del 1 is equals to mod del 1 into sin theta, and in this part sin theta, theta equals to 0 degree. If sin theta equals to 0 degree then it equals to 0.
Then in this part, del 1 cross del 2 equals to del 3. Del 2 cross del 3 equals to del 1, and del 3 cross del 1 equals to del 2. Because when we cross product of del 1 cross del 2, then which is in the direction of del 3, so that we get the value of del 3. Similarly for del 2, del cross del 3 equals to del 1, and similarly for del 3 cross del 1 equals to del 2. Then in the next part, in this part, del 2 cross del 1 equals to minus del 3, because minus negative sign indicates that so when we do this part, del 2 cross del 1 equals to minus del 3, because when we use right hand thumb rule, del 2 cross del 1 means it is like that, and thumb which is in the inward direction, but del 3 which is in the outward direction. The direction is opposite, so that negative sign is here. Similarly for del 3 cross del 2, del 3 cross del 2, it is also in the minus direction, and del 1 cross del 3 equals to minus del 2. Then in the next slide, then in this slide, we are learning about the explanation of vector in terms of its components. So basically, this is the v vector, which is equals to del 1 into v1 plus del 2 v2 plus del 3 v3, which is equals to summation of I equals to 1 to 3 del I into vi. I is varying from 1, 2 and 3. If you put I 1, then we got this term. Then if we put I equals to 2, then we got this term. And if we put I equals to 3, then we got this term. Then del 1, del 2 and del 3 are the unit vectors here, and v1, v2, v3 are the components of v vector. If we add this totally, then we got the v vector, which is equals to summation of del I vi. I is varying from 1 to 3. Then this is the magnitude of mod v vector in square root v1 square plus v2 square plus v3 square, which is equals to in root summation of vi square. Then two vectors and v and w are equal if their components are equal. It means that if v vector which is equals to w vector, that it means that v1 equals to w1, v2 equals to w2 and v3 equals to w3. In this way we can explain this part. Then in the next, addition and subtraction of vectors. V plus minus w equals to summation of I del I into vi plus minus summation of I del I into wi, which is equals to summation of I del I into in bracket vi plus minus wi. This part we can write by mathematical. Then in the next part, this is the multiplication of vector by a scalar. S is the scalar and v is the vector here. If we multiplied scalar quantity by vector quantity, we know that v is here summation of I from 1 to 3 into del I vi. If we multiplied scalar into vector, then we got this term. So the next part is scalar product or dot product of two vectors. So here it denotes that dot product v vector and w vector, v dot w. So that this is the expression of v, and this is the expression of w. V vector is summation of I del I into vi dot w vector is summation of j del j into wj, which is equals to this part summation of I summation of j del I dot del j vi into wj. We combine this part because del I del j are the unit vectors, and then by this we got this term summation of I summation of j into del I j vi wj. Then the next part is vector product of or two vectors v cross w. This is the v vector and this is the w vector. So basically v vector is summation of I del I into vi. Then w is summation of k into del k into wk. Then by this we got this term, and this is the term. By this we can solve del 1, del 2 and del 3. v1, v2, v3 are the components of v,
and W1, W2 and W3 are the components of W vector. Then next part is multiple vectors products. We can write that U dot V cross W. We can write this part in this part U1, U2, U3 and V1, V2, V3 are the components of V1 vector, and W1, W2, W3 are the components of W vector. So basically in this part, the expansion of tensor in terms of its components, in the first direction, then this is the direction of del 1, this is the direction of del 2, and this is the direction of del 3. First we take the components of del 1, then in the second figure we take the components of del 1, del 2. This is the direction of del 1 and this is the direction of del 2. Then in the third figure we take del 1, del 3. Then in fourth we take del 2, del 1. Then in fifth del 2, del 2. Then sixth del 2, del 3. And 7 del 3, del 1. 8 del 3, del 2. And this is del 3, del 3, which is in the same direction. In this part del 2, del 2 which is in the same direction, del 1, del 1 which is in the same direction. Then coming to this part, we got the tensor value, that is del 1, del 1 tau 1 1 plus del 1, del 2 tau 1 2 plus del 1, del 3 tau 1 3 plus del 1, del 2 tau 2 1, del 2, del 2 plus tau 2 2 plus del 2, del 3 tau 2 3 plus del 3, del 1 tau 3 1 plus del 3, del 2 tau 3 2 plus del 3, del 3 tau 3 3. In this part we got this term. Wait a minute. By this we get this expression, summation of I equals to 1 to 3, summation of j equals to 1 to 3 into del I del j tau ij. Then this is the important terms. The first one is tau ij equals to tau ji. The tensor is said to be symmetric. If this is valid, then the tensor is symmetric. If in the second condition the tau ij equals to minus tau ji, then the tensor is said to be antisymmetric, and this is also the important term. In this way we got the tensor term. So in this slide we are going to explaining about the addition of tensors, and so basically the two tensors here, first tensor is sigma and the second tensor is tau. So basically the expression of sigma is here that summation of I, summation of j del I del j into sigma I j plus, and this is the expression of tau tensor, summation of I, summation of j del I del j tau ij. When we add these two terms we got this term, that is summation of I, summation of j del I del j into in bracket sigma ij plus tau ij. In the next part we are learning about the multiplication of a tensor by a scalar. Here S is the scalar, here S is the scalar part and T is the tensor. So basically when we multiply the scalar part by the tensor, then we got this term, that is summation of I, summation of j del I del j into S tau ij. This is the scalar part, so that we directly multiply here. Then the same, this is the important statement, the same is true for dielectric products. Then the next part is the scalar product or double dot product of two tensors. The two tensors may be multiplied according to the double dot operation. If you have to dot the product of two tensors, then double dot operation is used. This is the term of sigma and this is the term of tau. By this we got this expression, that is summation of I, summation of j, summation of k, summation of l, del I del j dot double dot operation of del k del l, sigma ij sigma t tau k l. By this we got this expression. So in this part, so in this slide we are trying to learn about the dot product and the cross product of
tensor and vector. Here T is the tensor, here T is the tensor and V is the vector. This is the expression of tensor, and this is the expression of vector. The tensor is summation of I, summation of j, del I, del j, tau ij, and v vector is summation of k, del k, vk. When we do the dot product, then we got this expression, summation of I, summation of j, summation of k, in close bracket del I, del j, dot del k, tau ij into vk. When we combine this expression, we got this term, that is summation of I, summation of j, summation of k, del I, del jk, tau ij, vk, which is equals to summation of I, del I, in curly bracket, summation of j, tau ij, vj. Then in the next part, in this part we are trying to cross product of tensor and vector. This is the expression of tensor, and this is the expression of vector. Then in this part, when we do the cross product, we got this term, summation of I, summation of j, summation of k, in a close bracket, del I, del j cross del k, into tau ij into vk. Then in the next part, when we solve it, then we got this term, summation of I, summation of j, summation of k, summation of l, del I, del j, tau ij, vk, which is equals to this term. When we combine this term, then we got this term. Then this is the del operator. In this part we are learning about the vector and tensor differential operations, and this is the del operator, which is equals to del 1 del by del x1 plus del 2 del by del x2 plus del 3 del by del x3, which is equals to summation of I, del I by del xi. So in this slide we are going to explaining about the gradient of scalar field. Here S is the scalar function. Here S is the scalar function, and the variables are x1, x2 and x3. Then operation of del on S. When we do that operation of del on S, here S is the scalar function. Then we got this term, del 1 del S by del x1 plus del 2 del S by del x2 plus del 3 del S by del x3. Here we got here the del expression. We know that this is del 1 del by del x1 plus del 2 del by del x2 plus s3 del 3 del by del x3. This is the expression of del operator, and when we do the operation of del on S, then we got this term, that is summation of del I, del S by del xi. Then in the next part, these are the three important properties, commutative, associative and distributive. In this part, the del S does not value these two properties. First one is commutative and second one is associative, but it valued only these properties. Distributive, which is del R plus S in bracket R plus S, which is equals to del R plus del S, and these two properties that are commutative and associative, which are not valued by del S. Then in the next part, this is the divergence of vector field, del dot v vector. This is the expression of del, and this is the expression of v vector. When we do the dot product of this del dot v vector, then we got this term, summation of I, summation of j, del I, del j, del by del xi into vj. Del I, del j are the constant, so that we take on the other side, and we got this term. Then which is equals to summation of I del vi by del xi. Then this is also the three properties, commutative, associative and distributive. In this also we only valued distributive term, because these two expressions are not valued here.
So in this part we are trying to learn about the curl of vector field. So basically here we are trying to learn about the cross product of del cross v vector. We know the del expression and also we know the v expression. This is the del expression and this is the v expression. So basically del is equals to summation of j del by del xj cross v vector, which is summation of k del k into vk. When we do the cross product of these two terms, then we got these terms, that is summation of j summation of k in close bracket del j cross del k into del by del xj into vk, that is which is equals to this term, summation of I summation of j summation of k del I del by del xj into vk. Then we can solve by this, that is del 1 del 2 and del 3. In this part we are trying to write the components of del, that is del by del x1 del by del x2 and del by del x3. These are the three components of del operator, and these are the three components of v, that is v1 v2 and v3, which is equals to this part. We also write this, 1 minute. So basically we write this, first we solve for this del 1, that is del 1 equals to del 1 into, then we multiply these two terms, then we minus, then multiply these two terms, that are del v2 by del x3, then minus for this term we do for minus, that is del 2 into in bracket, then we multiply these two terms. 1 minute. For these terms we multiply these two terms, that is del v3 by del x1, then minus multiply these two terms, that is del v1 by del x3, plus then we trying to calculate for del 3, that is del 3 equals to del 3 into, then we multiply these two terms, del v2 by del x1 minus, then we multiply these two terms. 1 minute. Then for del 3 we multiply first these two terms, then minus, then multiply these two terms, that is del v1 by del x2. In this way we got this expression like that. So in this part we are trying to learn about the vector and tensor integral theorems. This is the Gauss divergence theorem, which is important, and here V is the closed region, in space enclosed by surfaces. Here is surfaces. Then integration of with respect to V, del dot V in bracket del dot V dot dV, which is equals to integration of with respect to S in bracket n dot v dot ds, in which n is the, here is the del operator, v is the v vector, then n is the normal vector which is outwardly directed, then v is the vector ds. Then this is also the term two closely allied theorems by scalars and tensors, which are these two, that is integration of v del s dv
which is equals to integration of s ns ds. Then this is also the important equation, that is integration of v del dot tau in close bracket dot dv, which is equals to integration of s n dot tau ds, which is in bracket n dot tau. Then this is the important statement, that is the last relation is also valid for dielectric products Vw. Note that in all three equations that are del in the volume integral, which is just replaced by n in the three surface integral. This is 3. Then in this part we are trying to learn about the Stokes theorem. In this part the S is the surface bounded by the closed curve C, and here S is the surface bounded in the closed curve C. Then we got this expression. This is the basically the theorem. The integration of S n dot in close bracket del cross V dot ds, which is equals to integration of C in close bracket T dot V dc. Then the next part is Leibniz formula for differentiating a volume integral 2. Then let V be the closed moving region in space enclosed by surfaces. Basically the V is a closed moving region in space, and for the surface here, and the Vs is the velocity for the surface. Velocity for surface. Then we got this expression, d by dt, integration of v with respect to v, s dot dv, which is equals to integration of del s by del t dot dv plus integration of s into vs dot n dot ds. In this way, this is the Stokes curve theorem. So in this part we are learning about the vector and tensor algebra with the coordinates. So basically this is the x coordinate for in a figure, this is the y coordinate, and this is the z coordinate. And this theta is between the r vector and x coordinate, and p is the position. Then in b part theta is between the r and z. Then this is the phi. Here in this figure, in a figure, x equals to r cos theta, x equals to r cos theta, then y equals to r sin theta, r sin theta. Then in b figure, z equals to 1 minute. In b figure, z equals to r cos theta, z equals to r cos theta, and y equals to r sin theta, r sin theta. Then in cylindrical coordinates, the r bar is varying from 0 to infinity. R is greater than equals to 0 and less than infinity. Then theta bar is greater than equals to 0, less than 2 pi. Then z bar is less than greater than minus infinity and less than plus infinity. Then for spherical coordinates, the r is greater than equals to 0 and less than infinity, and theta is varying from 0 to pi. Then phi is varying from 0 to 2 pi. Then r and theta, the r bar and theta in cylindrical coordinates are not the same, and are then we got this term for rectangular, spherical, and cylindrical. For rectangular we got this expression, that is r equals to del x plus del y plus del z, and its magnitude is r equals to in bracket x square plus y square plus z square. Then for cylindrical, r equals to del r bar plus del z bar, and its magnitude is r equals to
in bracket r bar square plus z bar square. Then for spherical, r equals to there r and its magnitude is r equals to r. In this way, this is the vector and tensor algebra.